Hello everyone, welcome to our online classes. Student, this is the part 2 of your lecture number 2 in physics. We will discuss in this lecture distance and displacement and their differences, uniform and non-uniform motion and their graph, speed and velocity, and how the manner we accept to find the average speed and average velocity. So let's start with the distance and displacement. Student, we know very well distance and displacement, these are the two quantities. One has the magnitude and direction both, but one has only magnitude. Distance is that quantity which has only the magnitude but no direction, but displacement is a quantity which has magnitude and direction both. So student, let us start with this example. This is town A and town B. So student, you can see that in this lecture this is the shortest distance between town A and town B, and this is path taken by the object when the road is blocked. जब यहाँ पर रोड ब्लॉक था तब ऑब्जेक्ट ने जो दूसरा टाउन एक्सेप्ट किया है बी तक पहुँचने के लिए, दूसरा राउंड या दूसरा पाथ एक्सेप्ट किया है बी तक पहुँचने के लिए, वो आपके शॉर्टेस्ट पाथ से कैसा है, बड़ा है. We know very well distance is the total path length covered by an object in his journey, and the displacement is the shortest length from initial point to final point. This is the initial point and this is the final point, student. So let's start. Now you can see that here the shortest distance of this 20 kilometer and the another path taken is length 50 kilometer. So student, we can say this is our distance, this is our distance, and this is our displacement. So student, distance is that which has only magnitude but no specific direction. You can see that displacement is said to be distance with direction. Displacement हम किसको कह सकते हैं, जब distance में direction mix हो जाती है तो उसको क्या कह सकते हैं हम, displacement कह सकते हैं. I hope you can understand the difference between distance and displacement. Student, always remind that distance always be greater than and equal to displacement, but displacement never be greater than with the distance. Displacement would be positive or negative, but distance always be positive, क्योंकि दूरी कभी negative हो ही नहीं सकती. Okay, let's see. If object moves in a straight path, अगर कोई object straight path पर move करता है like this, here the initial point is this and final point is this. The shortest distance is this, so we can say distance and displacement are equal. And this is the another example in which this is your initial point and this is your final point. This is the longest path which you taken to reach your destination, but the आपका डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ यहाँ पर, डिस्प्लेसमेंट तो सिर्फ इनिशियल टू फाइनल पोजीशन की लोकेशन को देखकर ही होना है. सो वी कैन से द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द initial and final position is known as displacement. What happen if an object moves in a circular path? क्या होगा अगर कोई ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ पर मूव करता है, सर्कुलर पाथ इन दिस सेंस, इन दिस मैनर, इन दिस, जब कोई ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ पर मूव करता है स्टूडेंट्स, तो उसका जो डिस्टेंस है वो किसी भी सर्किल के सर्कमफेरेंस के इक्वल होता है, बट ऑब्जेक्ट जिस पॉइंट से स्टार्ट हुआ है मूव करना, अगर उसी पॉइंट पर आकर रुक जाता है, then we can say the final displacement is 0. Now let us move on the other topic, uniform and non-uniform motion. What is the uniform motion? When an object cover equal distance in equal time interval, the motion is called the uniform. And when object covers unequal distance in equal time interval, the motion is said to be non-uniform. It means we can say that अगर इक्वल टाइम इंटरवल में इक्वल डिस्टेंस कोई ऑब्जेक्ट कवर करता है उसको हम यूनिफॉर्म मोशन कहते हैं. अगर इक्वल टाइम में डिफरेंट डिस्टेंसेस कवर करता है तो उसको नॉन यूनिफॉर्म मोशन कहते हैं. लेट्स सी, हियर आर द सम एग्जांपल्स टू cover the total distance.
the total distance covered is equals to the constant distance covered into total time. Constant distance is 3 and the time taken is 10 minute, 20 minute and so on. What would be the speed? Speed कितना होगा स्टूडेंट? अगर हम डिस्टेंस को 3 मीटर लेते हैं और टाइम को 60 सेकेंड लेते हैं, then total distance would be our 180 meter. The speed is distance upon time taken. You can see that in this example. Speed equals to distance over time. Then what would be the unit of speed? Speed की unit क्या होगी स्टूडेंट? Distance always measured in meter in our MKS system and time always would be measured in second. So we can say meter upon second. It means this. Okay, meter per second. This is the unit of distance and this is the unit of time. So the SI unit of speed is meter per second. Meter per second. Okay student. The another units of the speed is centimeter per second, miles per hour, kilometer per hour and so on. Okay, now let's move. Look at the example which seen in your screen. Walking, running, riding a bicycle, viewing a car, traffic lights, bus crowded. So we can say कि यहाँ पर जितने भी आपके मोशन के टाइप हैं वो सारे टाइम डिपेंडेंट, ट्रैफिक डिपेंडेंट एंड क्राउड डिपेंडेंट है. इट मीन्स कभी आपकी स्पीड तेज होगी, कभी आपकी स्पीड स्लो होगी. So we can say the speed is not constant and this type of motion is known as the non-uniform motion, student. Okay. Now, how can you measure the speed when an object perform a non-uniform motion? So, let's see the speed. We have already learned that speed equals to the distance upon time. Here, their object does not cover the same distance in same time. So, the speed इज सेट टू बी द एवरेज स्पीड. स्पीड को हम यहाँ पर नॉर्मल स्पीड नहीं कहेंगे, नॉन यूनिफॉर्म मोशन में क्या कहेंगे? एवरेज स्पीड. फॉर एग्जाम्पल, अगर एक पर्सन अपने डेस्टिनेशन पे पहुँचना चाहता है, डेस्टिनेशन डिस्टेंस इज़ 100 किलोमीटर. फर्स्ट आवर वो पैदल चलता है, सेकेंड आवर वो बस से जाता है, थर्ड आवर में वो ट्रेन से जाता है. इट मीन्स यहाँ पर 3 व्हीकल उसने यूज किए हैं और 3 व्हीकल में जो टाइम टेकन है वो अलग अलग है. सो यहाँ पर हम ये नहीं देखेंगे कि किस व्हीकल के द्वारा वो कितना दूरी पर गया. वी हैव द टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय द पर्सन इन द टोटल टाइम इंटरवल विच इज टेकन बाय द पर्सन. ओके, सो द एवरेज स्पीड इज नोन एज द टोटल डिस्टेंस कवर्ड ओवर elapsed टाइम. इट मीन्स टोटल डिस्टेंस कवर करने में ऑब्जेक्ट को टोटल कितना टाइम लगा वो होता है हमारा एवरेज स्पीड. सो स्टूडेंट, वी नो वेरी वेल द एवरेज स्पीड इज इक्वल्स टू द टोटल डिस्टेंस कवर्ड ओवर elapsed टाइम. वी हैव रीड दैट in this example the cover distance is 60 meter in 60 seconds. So we have the total distance 60 meter and total time taken is 60 seconds. So the average speed is 1 meter. Okay student, this is the formula of the average speed when a person covers the same path and return back the same path. This is the 2x by upon x plus y. Here x is going speed and y is the returning speed. Okay student, this is the definition of your average speed. Average speed, if this is the total distance traveled d divided by the total time t, it's take the travel that distance, the average speed would be total distance over total time. So we represent average speed by v bar equals to the d upon time. This is the instrument which measure the instantaneous speed which is named as the odometer. You know very well, speed is not constant in the uniform motion. So student, let's move. I hope you can understand the concept of the average speed. So this is the second example. If you have the 20 meter in 1 minute, then what would be the average speed? क्या हम स्टूडेंट्स इसको
ऐसे ही निकाल सकते हैं। मीटर के साथ आप देख सकते हैं यहाँ पे डिस्टेंस की यूनिट मीटर है और टाइम की यूनिट मिनट है, बट मिनट इज नॉट आवर स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ द टाइम. आवर स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ टाइम इज सेकेंड. सो वी does not calculate the average speed in this manner. We have to change this time unit. The time unit minute would be कितनी होगी हमारी, सेकेंड होगी. सो 1 minute इक्वल्स टू द 60 सेकेंड. सेकेंड इज द स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ योर टाइम. अगर आपको कहीं पर भी मीटर के साथ टाइम की यूनिट मिनट या आवर दी जाती है तो आपको उसको सेकेंड में कन्वर्ट करना पड़ेगा, बिकॉज डिस्टेंस ऑलवेज मेजर्ड इन मीटर and time always measured in second and the mass always measured in kilogram in our MKS system, always reminded. So our answer would be 120 upon 60 second. Here 60 second comes from the 1 minute. Okay, the average speed would be 2 meter. I hope you can understand. Okay, let's take the another example. Here destination, to reach our destination car starts from 0 to B. ओके, हेयर जब कार आपकी ए पॉइंट पर थी तब इसकी स्पीड सपोज दैट 0 मीटर थी, फिर कुछ सेकंड बाद 2 हुई, कुछ सेकंड बाद 4 हुई, हमको नहीं पता कि वो कितना है. बट अगर ऑब्जेक्ट हमारा यूनिफॉर्म मोशन कवर कर रहा है देन द ग्राफ ऑफ योर स्पीड इज वुड बी अ स्ट्रेट लाइन एंड yes, let's see. This is the example, another example of a non-uniform speed. Here we can say that the object covered non-uniform distance in equal time. Okay, this is the graph represents the uniform motion. Always remind the student, uniform motion का जो ग्राफ होता है वो हमेशा एक स्ट्रेट लाइन होता है. अगर ग्राफ आपका स्ट्रेट लाइन है, दिस इंडिकेट्स दैट ऑब्जेक्ट परफॉर्म यूनिफॉर्म मोशन. ओके, this is the graph for the non-uniform motion student. You can see that here is not the this graph is not in the position of straight line. यहाँ पर बहुत सारे अप एंड डाउन्स आपको नज़र आ रहे हैं. ये इंडिकेट कर रहे हैं कि ऑब्जेक्ट ने किसी सेकंड पर अपनी स्पीड को स्लो किया है, किसी पर हाई किया है. नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट विच इज़ द स्पीड. व्हाट इज द स्पीड स्टूडेंट? हाउ कैन यू डिस्क्राइब दैट स्पीड? डिस्टेंस कवर्ड इन ए गिवन अमाउंट ऑफ टाइम. इट मीन्स दिए हुए समय में जितनी डिस्टेंस कवर की जाती है उसको हम क्या कहते हैं? स्पीड कहते हैं. सो स्पीड इक्वल्स टू द डिस्टेंस अपॉन टाइम. स्पीड मल्टीप्लाइड टाइम टेकन. इट मीन्स अगर आप यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं यू फाइंड द डिस्टेंस कवर्ड. ओके स्टूडेंट, These are the three terms, speed, distance and time. हम इस फॉर्मूले से अपनी 3 चीज़ें निकाल सकते हैं अगर हमको कोई भी 2 दी गई हैं. ओके, टाइम दिया है, स्पीड दी है, डिस्टेंस निकाल सकते हैं. डिस्टेंस दिया है, टाइम दिया है, स्पीड निकाल सकते हैं. एंड डिस्टेंस एंड स्पीड दिया है तो टाइम निकाल सकते हैं. ओके, नाउ इफ स्पीड इज 50 मीटर एंड टाइम इज 1 minute, it means 60 seconds. Then what would be the distance? Then apply your formula, distance equal speed into time. 50 into 60 seconds, the answer would be 300 meters. Okay student, we know the distance 3000 meter, but we don't know the direction in which we have to move. हमें जिस डायरेक्शन में मूव करना है हमको वो डायरेक्शन नहीं पता. So the speed is said to be the scalar quantity because it has the no direction. It only provides the magnitude without any direction. Okay student, we know very well every quantity which have only magnitude is known as the scalar quantity. Now move on the second topic. Second topic is about the velocity. So velocity depends on the displacement student. How we can say? Speed depends on the distance covered and displacement contains distance covered plus direction. It means it has the 2 dimension information. If speed with direction takes place then it would be called velocity. Okay student, speed plus direction यानी कि आप कह सकते हो कि the speed in with a direction, the speed with a direction is known as the velocity. Okay, velocity always have the direction. Let's see, speed is 50 meter in north in 1 second, then the velocity would be 55 miles south. So speed only the 55 miles per hour
but velocity is 55 miles per hour in south. The SI unit of velocity is also meter per second because displacement also measured in meter. Okay, SI stand for the International System of Units. Okay student, this is the SI unit like as the MKS system. Now come to the point, speed is a scalar quantity and velocity is the vector quantity. Okay student, vector quantity which has the both direction and magnitude. Speed plus direction is known as velocity. It means speed with direction is known as velocity. Now next topic is average velocity. What is the average velocity, student? How can we find the average velocity? So now average velocity is same as the average speed. एवरेज स्पीड में फॉर्मूला हम लेते हैं टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम. लेट्स सी, here the distance is 50 kilometer and displacement in 20 kilometer. So the average speed equals to the total distance upon total time. It means that 50 upon 2. The answer is 25 kilometer per hour. Okay student, this is the average speed. Now average velocity equals to the total displacement upon time. Like as by the definition, velocity is equals to the displacement covered in time taken. Okay. So the formula is displacement over time. Now let's see in this example, if a blue car covers the total path and after that reach its initial destination, it means initial and final point at the same point. So what would be the average velocity, student? Yes, the average velocity would be 0. Reason being, our displacement is 0. Why is displacement is 0? Because initial and final point both are at the same position. So the displacement is not covered by the car. Now speed is equals to the 300 kilometer per 100 minute if the total path length is 300 kilometer and the time taken to cover the path is 1 hour 40 minutes. Okay. Now if time is 3 hours, what is the average velocity? Again, the total displacement after the 3 hours, you can see that the total time taken is 1 hour 30 minutes, not 40 minutes, 1 hour 30 मिनट. इट मीन्स 1.5 घंटा लगता है इसको एक राउंड कवर करने में, तो 3 घंटा लगेगा इसको पूरा राउंड कवर करने में. इट मीन्स आफ्टर 3 आवर कार इज इन द सेम पोजिशन. सो नाउ द एवरेज वेलोसिटी इज ऑल्सो 0 मीटर पर सेकेंड. ओके स्टूडेंट, यहाँ पर कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं हुआ है इसलिए हमारी एवरेज वेलोसिटी 0 है. दिस इज द ग्राफ विच इंडिकेट्स दैट विच इज the higher speed and which is the lower. You can see that the slope it means the angle between the axis. You can see that जिस ग्राफ की स्लोप जितनी ज़्यादा होती है उसकी वेलोसिटी या स्पीड भी उतनी